Hello, welcome once again in the series of lectures physics. In some last classes we were discussing about forces. We discussed about contact forces. We discussed about the force of tension when two bodies are connected through a string. We discussed also the force of a spring, or we say it as a spring force. But now in today's class what we have learned, we shall see the application. After that we will be able, or we will be in good position to solve some problems on it. So what is the definition of force we have already studied. So before going in details, let's consider the important one, that is Newton's laws of motion. So one by one we shall discuss, and then we will be able to write the equations of motion as the application of the Newton's laws, and then we shall solve some problems on it. So first, what happens if we are talking about the first law? What it says? It says each and every particle tries to continue its state of motion unless acted upon by a physical cause which is known as force. So every particle tries to maintain its state of motion, means rest, or we shall say it uniform motion. Unless acted upon by cause which is nothing but force. कहने का मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो वह अपने स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाहता है. कब तक? जब तक कि एक्टेड अपॉन बाय a cause. What is this cause? This cause is named as force. So what happens? This is Newton's first law, and from Newton's first law we get the definition of force. Means what is force? Force can be defined as a physical cause which can be responsible for changing the state of motion of a particle, or a state of uniform motion of a particle. When we say about uniform, it means either the particle is at rest or moving with constant velocity. So in this case what happens? You have to consider that कि either velocity of particle is changing or not. If velocity of particle is changing, it means
it has some acceleration, or if it has some acceleration, it means it has already been acted upon by a force that is acting on it. So sometimes you will be able to, or you will be asked to find the value of forces. So Newton's first law of motion gives the definition of force. So Newton's first law gives definition of force. From first law we can get the definition of force. Now see what is second law. Now see what is second law. Second law. Newton's second law gives the magnitude of force. It gives magnitude of force. तो फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का डेफिनेशन मिलता है और सेकेंड लॉ से हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे. करेक्ट. सो व्हाट एक्चुअली इट सेज मैथमेटिकली the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is proportional to the force applied. Is proportional to the force applied. Means what says, let a mass of a particle m with velocity v at any time. So if we want to have the momentum, we define momentum as the combined effect of mass and velocity. So what we write? Momentum equals to mass into velocity, or we can write P equals to m into v. P equals to m into v, where m is constant. So if we want to write the rate of change of momentum, what is the definition? The rate of change of momentum. So for finding the rate of change of momentum, differentiate it both sides. Differentiating both sides. What we get? dp by dt equals to dmv by dt. And now mass is constant, so take it outside, it will be dv by dt. It will be dv by dt. So this is rate of change of momentum.
And the rate of change of momentum, what is called it? The rate of change of momentum is proportional to the force applied. So what is rate of change? The rate of change will be termed as F equals to M, or what is dV by dt? dV by dt equals to A. Rate of change of velocity is the acceleration, so M into A. This is the equation we are trying to find out. We should write here F equals to M into A. So now M is constant, so we can write here F is directly proportional to A. Correct? So from here we can see that the rate of change of momentum, when we are talking about the rate of change of momentum, it will be proportional to force. A proportional to A, because M is the constant here, so we can remove the sign of equality and change it into proportionality. So we can write F equals to MA. F equals to MA will be the equation we will be talking about in number of cases or throughout the mechanics. Throughout the mechanics, we shall be talking about this important equation that defines Newton's second law of motion, and which will be called as F equals to M into A, and the direction of force and the acceleration occurs in the direction of force. मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा. मीन्स एक्सीलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज सेम होगा. और कैसे इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि जिस डायरेक्शन में फोर्सेस काम करेगा, अब ये एक सिंगल फोर्स हो या कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू फोर्सेस हो, इस केस में जिस केस में नेट फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा. मीनिंग इज दैट the rate of change of momentum is proportional to or equal to the force applied on the particle. We can say like that. So this will be the Newton's second law, from where what we got an equation F equals to M into A. Now we shall discuss third law of motion. Now remove this, write third law. What it says, to every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. Why it is? For the concept we can think action and reaction do not apply on same object or same particle, anything what we to say. मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे होगा, सेम बॉडी पे नहीं होगा. एक बॉडी यदि किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है तो वह जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है, दूसरा बॉडी उस बॉडी पे सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. करेक्ट. फॉर एग्जांपल, सी व्हाट हैपेंस.
Suppose this block M is placed on this surface. So this block, this surface, suppose this surface is S, will apply the force of normal reaction in upward direction. So this surface is applying on the block. Suppose this is an action. So this block will apply the force on this surface with the same magnitude of N, but that is opposite in direction. That is opposite in डायरेक्शन. सो यह इस बॉडी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा. सपोज दिस टू ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट एंड लाइंग ऑन ए सरफेस A and B. This is the common surface. तो if A B पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा रहा है इस सरफेस पे, तो B उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन. सो द एक्शन एंड रिएक्शन, actions and reaction happens on two different bodies. They are in contact. They are in contact. So first one, or suppose this particle goes down. Why? Because we say that the earth gravitational pull is here, so earth is pulling this body in the downward direction. So what it does? It also pulls the earth in upward direction. Difference is only that the acceleration will be so small that we will be not able to measure it, or we cannot experience it, but this is natural laws explained by Newton only. So action and reaction will happen onto different body. One will apply the forces as an action, so another will also apply the same forces but in opposite in direction, and we shall call it as reaction. So this is the basic concept behind it. These are the laws we have already studying from class 9. Perhaps you all are known to it. We have studied it many times, but here what we are trying to draw as a concept that will be helpful in solving the problems is the equation F equals to m into A, force equal to mass into acceleration, or we shall be writing it after that F net. If the single force F equals to ma, but if there are more than one forces acting on the particle, what we have to do? We have to first find out the resultant of the forces. Suppose there are number of forces F1, F2, F3, so on Fn. Number of forces acting on the body, and number of forces are acting on the body. So what we will do, we shall be trying to find out the value of F net. F net means resultant force, means resultant force. F net equals to, what will be the vector sum of all the forces, plus F2 plus F3 plus so on plus Fn. So if there are number of forces acting on a body, we shall be trying to find the resultant forces. What is the net forces? That will be the single forces F net, and this F net will be equal to mass into acceleration. So this is very simple equation, or magnitude. In terms of magnitude, we can only write F equals to ma. We shall be writing, and we shall be trying to find out the direction also. So in terms of magnitude, we can write F equals to ma. But how we should apply? This will be the center point of our discussion. This formula, this equation seems very simple,
but we have to deep dive to learn some concept behind it. How we will be able to use this equation? So the first criteria will be, if on a system of particles or on a single particle, anything, there are number of forces acting on it, then first we shall be trying to find out the resultant of all these forces. Means what is the single value? What is the single value of the forces that can replace the effect of all these forces? F1, F2, F3. They all have F1, F2, F3, Fn. Each forces has its own individual effect on the particle. But what we want to have the combined effect. We want to have the total effect. What is the total effect? What is the resultant effect? So for that purpose, we will be doing one thing. We shall be trying to find out the value of resultant, or we shall be denoting it F net, and then we can apply this equation F equals to m into A, where m will be the mass. If a single particle, it is the mass of the single particle, and if our system is the combination of so many particles, n number of particles, then it will be the total mass of that system. So now see, we shall learn it through examples by solving some problems. So what actually we are trying to do for solving or applying the Newton's laws of motion, remember some things. What are the things are? First, decide the system. Decide the system. Can be one particle, one body, or number of particles. There can be, suppose this is a block M and we are giving a push by force F in this direction, in the horizontal direction. So this is a single particle, and if we attach another block, suppose this will become M1 and this will become M2. So now there are two particles and a single force is acting on that particles. There are two particles. So can we decide taking together these two as a system? When we talk about as a system, means all such combination will be treated as a single one. So we shall consider like this: M1 plus M2. There are two objects, M1 plus M2, and the force of F in the same direction. But when we can think like this, or when we can apply our concept in this manner, only thing is that if there are more than one particle in the system, we are going to take as the system, acceleration of whole system should be same. The only condition is that acceleration of all the particles or the system must be same. Then only we can take it as the system. अब यहाँ पे क्या होगा कि यदि यह फोर्स लग रहा है तो M1 और M2 साथ में मूव करेगा, तो M1 और M2 दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जितना स्पीड से M1 मूव करेगा उतना ही स्पीड से यहाँ M2 मूव करेगा, करेक्ट. और वी कैन से लाइक दिस कि दिस इज M1, this is attached by a string M2 and a force is applied on it. So this force will pull M2, और M2 का जितना एक्सीलरेशन होगा इस डायरेक्शन में, सेम एक्सीलरेशन
m1 का भी होगा, तो now m1 and m2 moving with the same acceleration will have the same acceleration, so now this can be treated as a system. This can be treated as a system. In the same way, when F is pushing m1 or m2 both will have same acceleration, both will travel equal distance in equal time, or the velocity, change of velocity for m1 or m2 will be same also. So in these conditions, so when we are deciding the system, we have to decide the system, but before deciding the system we have to see this thing ki what we are trying to do. We have to take the system, we have to consider that the acceleration of all the particles within the system will have a single value for the force applied externally. Then we will be able to find it. So first we have to decide the system. I am again repeating this statement. First we have to decide the system. Only thing is that we have to consider the acceleration within the system or for a system to be constant. Another thing is that draw forces acting externally on the system. एक्सटर्नली कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और इसी को हम बोलते हैं FBD, मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम. तो उस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है उसका एक लिस्ट निकालना है हम लोगों को. ड्रॉ फोर्सेस, मेक द लिस्ट, make the list of forces, but all these should be external forces. We shall not consider internal forces. When deciding the system, we shall not consider the internal forces, or actually no one will consider the internal forces. Everyone will consider the external forces. And then in third step, this was the second step, and then in third step what we have to do, we have to find equation of motion, F equals to, or F net equals to m into a, or simply in terms of magnitude ma. But this will not be simple. We have to think something else, because in one direction, in one dimensional motion, the particle will be moving on a straight line, and we can say that the force is acting in the direction of the motion of the particle. That will be fine, or we can write the equation F equal to ma very simply. But where in two dimensional motion, when the particle has x component also and y component also, what we should do there, for our analysis part, we shall write the different equations in two directions. So suppose on a straight line, if this particle, this force is pulling, so this particle will move in this direction. So definitely there is a single force, and it is easy to write the equation. Anybody if want to have the acceleration, it will be F equals to m into a, or from there we can write a equals to F by m. If F and m is known to us, we can have this. But now when the x and y means two coordinates of particle will change, in that case what we should do, we have to write the equation in both x and y direction, and then we shall be solving the problems. We shall see particle will move in a single direction
that's for sure, but the x and y both the coordinate will change. Suppose what happens, suppose this is an inclined plane of angle theta with the horizontal, with the theta of the horizontal, a block M is placed here. A block M is placed here. So definitely as the part of the system here, as this surface will not move, this, if this is frictionless surface, consider this is a smooth, means no friction is there. So definitely this particle will move in this direction, come down on this inclined plane easily. But see here, the particle, how many forces are acting on this particle? So let's draw the free body diagram. So when we are trying the free body diagram, if it has mass, so weight mg will be acting in the downward direction. In the downward direction. And there will be a force of normal direction, a force of normal direction which is perpendicular to this surface, that we have already learned. So now see, there are two forces, one is mg, another is n. No other force is acting on this particle. No other force is acting on this particle. And we have studied that the acceleration occurs in the direction of force. In the direction of force. So since the particle is moving on this line, so definitely the direction of acceleration will be in this direction. But here we see that there is no any force on this line. न्यूटन्स लॉ से हम लोगों ने सीखा है जस्ट इस क्लास में ही कि पार्टिकल का मूवमेंट जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रही है हम सपोज करेंगे कि उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है, एक mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और एक फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो कि जिस सरफेस पे यह रखा हुआ है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस काम नहीं कर रहा है, तो फिर यह पार्टिकल आ कैसे रहा? इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को हमको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख पाएंगे। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, यह एक सजेशन है, इसको टिप्स समझिए, एक टिप्स याद रखना पड़ेगा। दो काम कर सकते हैं हम यहां से, या तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई लेंगे, जो प्रॉपर्ली हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स और उस पे परपेंडिकुलर जो वर्टिकल होगा उस पे वाई, तो एक्स एंड वाई हो जाएगा। ये काम हम लोग करते आए हैं नॉर्मली, इस ढंग से हम लोग अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एक टिप्स ये है कि जिस डायरेक्शन में आपको पार्टिकल का मोशन दिख रहा है उसको ही एक एक्सिस ले लीजिए। मीन्स मैं इसी को एक एक्सिस ले रहा हूँ, इसी को एक एक्सिस ले रहा हूँ, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो इस पे जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी वाई एक्सिस। मीन्स जिस कोऑर्डिनेट को मैं ये ऐसा सोच रहा था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो चूंकि पार्टिकल यहां मूव कर रहा है इसी को इंक्लाइन कर दिया हमने, और एक को ये एक्स एक्सिस को ही 30 डिग्री से थीटा डिग्री से मूव कर दिया, तो अब ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो इसी को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, करेक्ट।
So if this is theta, so this angle will also be theta. This is theta, this is 90, this will be 90 minus theta, then this will be theta. अब x डायरेक्शन और y डायरेक्शन के फोर्सेस को लिखेंगे. अब mg का जो फोर्स है, mg का फोर्स ना तो x एक्सिस पे है, दिस इज आवर x एक्सिस, और ना ही y एक्सिस पे है. तो दिस इज नॉट ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस, सो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर ब्रेकिंग इट इनटू कंपोनेंट. तो mg मेकिंग एन एंगल थीटा विद द y एक्सिस in the negative direction, so the component of this force in this direction will be mg into cos theta, and in this direction the component will be mg sin theta. होप कि कंपोनेंट निकालना सबके को मालूम है. मतलब अगर ये x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, और ये कोई वेक्टर यहाँ p है, तो p का इफ इट मेक्स एन एंगल थीटा, तो जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसका कॉस थीटा वो कंपोनेंट के टर्म में आता है. तो यहाँ p कॉस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p साइन थीटा कंपोनेंट होगा. इस तरीके से mg का एक कंपोनेंट काम करेगा इस डायरेक्शन में, जो mg कॉस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा होगा. अब देखिए ये x के अलोंग जो काम कर रहा है, इस एक्सिस पे जो काम कर रहा है, वह एक सिंगल फोर्स है mg साइन थीटा, और ये निगेटिव x के डायरेक्शन में है, तो इसको हम माइनस आई लिखेंगे, सिंगल फोर्स, और इसको बोलेंगे हम fx, मीन्स द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द x डायरेक्शन. करेक्ट. और y डायरेक्शन में जो फोर्सेस होगा वह नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है n, जो काम कर रहा है j मीन्स यूनिट वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, और mg cos थीटा जो काम कर रहा है, यह काम कर रहा है निगेटिव j के डायरेक्शन में. तो जब इस दोनों का आप सम करेंगे और इस पार्टिकल पे y डायरेक्शन में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल का मोशन y डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जो है वह जीरो है. रिजल्टेंट फोर्स जो है वह जीरो है. तो रिजल्टेंट फोर्स Fy अगर बात करेंगे तो ये जीरो होना चाहिए. Fy जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि दिस और दिस फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होगा, मीन्स n इक्वल्स टू mg cos थीटा. mg cos थीटा. अगर वेक्टर सब भी करेंगे साइन के साथ तो n माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो n इक्वल टू mg cos थीटा यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा. लेकिन x डायरेक्शन में इसका मोशन है, इस डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है. सपोज करते हैं कि इसका एक्सीलरेशन a है, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन हम ले लिए, a से डिनोट करेंगे इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है. तो यह नेट फोर्स, दिस नेट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द पार्टिकल डाउनवर्ड. इस लाइन पे मोशन करने के लिए यही एक सिंगल फोर्स है इस पार्टिकल पे जो कि काम कर रहा है. तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे कि एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए. तो एफ नेट की जगह पे क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए, और यहाँ से mm कैंसिल हो जाए और a निकालना होगा, तो a मैग्नीट्यूड ऑफ a विल बी g साइन थीटा.
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन विल बी जी साइन थीटा। और देखिए जी भी कांस्टेंट और यह थीटा भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जो है यह कांस्टेंट है और मास से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर यह एक स्मूथ सरफेस है तो यहाँ 1 kg का या ब्लॉक हो, 2 kg का हो या किसी भी वेट का हो, उसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में कांस्टेंट आएगा। तो एक टिप क्या होगा, जो टिप की बात हम लोग कर रहे थे कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा, एक एक्सिस हम लोग उसी डायरेक्शन में ले लेंगे, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर जो उस पर जाएगा वह दूसरा एक्सिस हो जाएगा। फिर फोर्स को हम लोग एक्स के अलॉन्ग भी लिखेंगे और वाई के अलॉन्ग भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन नहीं है वहाँ अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अपोजिट फोर्स जब एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में एफ नेट उस डायरेक्शन में 0 के बराबर होगा, और जब एफ नेट 0 के बराबर होगा मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, सो दिस विल बी एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो कोई अगर यहाँ से पूछे कि फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, और एक्सीलरेशन जो इस केस में होगा वह जी साइन थीटा, वहाँ जी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी साइन थीटा जो कि कांस्टेंट है और मास इंडिपेंडेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होंगे हम लोगों के, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी सहायता कर सके। तो एक एक चीज़ सीखते हैं। अगर फिर रिपीट करता हूँ कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हम लोग उसी डायरेक्शन में एक एक्सिस को चूज करेंगे, तो डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दूसरा एक्सिस होगा, तो वहाँ से हम लोग का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। दोनों के तरफ फोर्सेस को, कंपोनेंट को लेंगे, कौन कौन सा फोर्सेस काम कर रहे हैं उसको लेंगे, और फिर देखेंगे कि पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल का मोशन नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे वह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन होगा, उस डायरेक्शन में हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करके रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन के टर्म में जाएंगे, और वहाँ से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू जो प्रॉब्लम का डिमांड होगा उस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास we shall be solving some problems on Newton's laws of motion. We shall be writing the equation, we shall be solving it in different conditions. Till now, enjoy, go and study the lecture. Thank you very much.